Hello, bachon. So let's read the question. Says first artificial DNA molecule was constructed by Cohen and dash in dash. They used dash enzyme to isolate the antibiotic resistance gene. They synthesized the recombinant DNA by linking the antibiotic resistant gene with dash DNA of the dash bacteria. Recombinant DNA with newly introduced antibiotic resistant gene was then transferred to another bacteria dash. So first option of the above, first is datum, third is restriction, fifth is E. coli. Second option with the above, fourth is plasmid, sixth is salmonella. Third option with the above, two is 1972, three is restriction, six is E. coli. And fourth option with the above, three is DNA ligase, four is plasmid, and five is E. coli. So the key concept for this question is first artificial recombinant DNA. ये फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए दो साइंटिस्ट ने दिया था, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन. इन्होंने ये दिया था 1972 में, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड द restriction endonucleases. Restriction endonucleases basically leave करते थे DNA between the nucleotides in the middle of the DNA at specific locations. यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवरी के बाद उन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया था, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था. जो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था उसमें ई कोलाई का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स था, जो उन्होंने आइसोलेट करा था विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. एंड इसके साथ प्रेजेंट था सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का मेन प्लाज्मिड. सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए मॉलिक्यूल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कोहेन एंड डैश. सो फर्स्ट होगा बॉयर, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन ने डिस्कवर किया था. सेकंड इज इन डैश इन 1972, सो 2 विल बी 1972. 3 यहाँ पे दिया हुआ है दे यूज्ड 3 एंजाइम टू आइसोलेट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. 3 होगा restriction endonucleases या restriction enzymes. Restriction enzyme to isolate the antibiotic resistance gene. The synthesized recombinant DNA by linking the antibiotic resistant gene with E. coli. They synthesized the recombinant DNA by linking the antibiotic resistant gene with dash DNA. इन्होंने लिंक किया था antibiotic resistant gene with plasmid DNA. Plasmid DNA of the dash bacteria. Plasmid DNA था salmonella typhimurium का. तो salmonella. This recombinant DNA was introduced with antibiotic resistance gene was then transferred into another bacteria जिसका नाम है E. coli. E. coli के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स थे, साल्मोनेला का प्लाज्मिड था, बट इसको इंट्रोड्यूस करा गया था E. coli में एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म. E. coli was the host which had replication of this rDNA. So इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट स्टेटम विच इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ 4 is plasmid, yes, and 6 is salmonella, which is wrong. थर्ड में दिया हुआ है 2 is 1972, yes, 3 is restriction, yes, and 6 is E. coli, yes, so this option is right.
एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है 3 इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज यहाँ पे कहीं है ही नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। So the final answer for this question is option C. Hope you understood well. Best of